सो बीम्स के बारे में स्टार्ट करना है आज से। अभी काफी सारे अल्फाज हम इस्तेमाल कर चुके हैं कि बार्स जो कि या टेंशन कंप्रेशन में हो सकती हैं, या चीजें होती हैं जो कि सिर्फ हम अज्यूम करते हैं कि टॉर्शन में हो सकती हैं। कि जिस केस में हम कहते हैं कि if you apply a certain torque then it's going to go through some displacement जो कि एंगल थीटा के टर्म्स में मेजर किया जाएगा। फिर बीम्स आ जाती हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं कि if you apply a force which is in the y direction, then it's only going to bend and nothing else is really going to happen. All of these assumptions sort of can be difficult to visualize can be कर क्यों रहे हैं, मगर हमेशा यही होता है कि is for simplicity is to break down the problem into chunks that we can handle. ठीक है। सो बेंडिंग इन बीम्स के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बीम आधी कंप्रेशन में होती है और आधी टेंशन में होती है। ठीक है। सो इफ फॉर एग्जांपल इफ आई इफ वी ड्रॉ व्हाट हैपेंस टू अ बीम, इसका जो सेंटर वाली लाइन है दैट्स गोना बी कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा अजीब सा मसला जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्यों होता है इसके, व्हेन आई राइट ऑन माय पेन ये अजीब सी हॉरिजॉन्टल लाइंस कीप अपीयरिंग। खैर, सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, इसके जो इसके ऊपर वाला इलाका है ना, वो आप इमेजिन करें कि वो थोड़ा सा कंप्रेशन में होगा। ठीक है। और इसके जो नीचे वाला इलाका है ये आप इमेजिन करें तो ये थोड़ा सा टेंशन में होगा। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी लेंथ बढ़ गई होगी, और ये जो ऊपर वाले इलाके हैं यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेंथ से लेंथ कम होगी, या सो ये जो है ना ये कंप्रेशन में होगा। सो इफ यू ड्रॉ लाइक स्ट्रेसेस, सो यू कैन इमेजिन के स्ट्रेसेस ऊपर वाली साइड पे you're gonna have compression, नीचे वाली साइड पे you're gonna have, या forces का जो वो बनता है इफेक्ट बनता है, you're gonna have tension. ठीक है। So that's going to be our assumption for a beam, and this assumption is basically uh, called the Euler-Bernoulli beam, कि जिसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में sort of इसके या कंप्रेशन में है या टेंशन में है बीम। ठीक है। सो जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे ना कंप्रेशन ना टेंशन में है, उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स बेंट, राइट, जिस तरह डायग्राम में शो की हुई है उस तरह की अगर बेंडिंग हो तो उसके ऊपर वाला इलाका जो है वो कंप्रेशन में और नीचे वाला इलाका टेंशन में होगा। ठीक है। और कुछ नहीं होगा, कोई जो है ना शियर स्ट्रेसेस या कोई और चीजें नहीं होंगी, सिर्फ यही कंप्रेशन और टेंशन ही होगी along, like when you move in the y direction, from your neutral, या when you move perpendicular to your neutral axis, जो कि बीच वाली लाइन है। ठीक है। सो बाय द वे न्यूट्रल एक्सिस भी बड़ी साइंस होती है। इफ यू गॉट अ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन तो फिर तो न्यूट्रल एक्सिस इज जस्ट द सेंटर ना, अदरवाइज द न्यूट्रल एक्सिस वो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इफ यू माइट रिकॉल, जो आई वाली वैल्यू थी, उस स्पेस किसी हद तक डिपेंड करता है, उसके रेफरेंस से आप निकाल सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है। सो वी आर नॉट गोना गेट इनटू दैट। इफ यू वांट टू गो ओवर अ बिट मोर डिटेल ऑफ द स्टफ, देन एक तो आप मैकेनिक्स और मटेरियल्स की थ्योरी कंसल्ट कर सकते हैं। दो आई विल, या आई माइट एटलीस्ट अपलोड ए सेकेंडरी सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल वीडियो जिसमें आई कैन स्पेंड लाइक अ लॉट मोर टाइम, maybe an hour or two, जस्ट बीम्स पे जनरली मैकेनिक्स और मटेरियल्स के पर्सपेक्टिव से ना, इट वुड बी, जिसका इस कोर्स को मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि उसके जो है ना प्रॉब्लम्स हैं इस कोर्स में डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकते हैं, जो एंड रिजल्ट्स इस्तेमाल होने हैं वो इसी प्रेजेंटेशन के अंदर हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आई विल डू दैट लेटर ऑन। ठीक है। Okay, so the thing about beams is के you can no longer assume that a linear interpolation model should be good enough to give us the deformation along the length of the beam. ठीक है। So look back to this deformation in the beam जो कि V हम कह रहे हैं, V is your deformation. ठीक है। So अगर मुझे for example मैंने इस beam को divide कर दिया दो या तीन nodes में, ठीक है, let's say ये तीन nodes हैं और ये दो elements हैं, element 1 and element 2. If I divide it, let's say, in two elements and three nodes, then it's very clear कि जिस तरह की ये deformation है ना, this cannot be explained in terms of a straight line. ठीक है।
एंड दैट्स ऑल्सो ट्रू बिकॉज एक तो चलो नजर आ रहा है ना कि बेंडिंग जिस तरह हो रही है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच में मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, ये बेंडिंग को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दूसरा मसला ये है कि इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस है ना, वो बाउंड्री कंडीशंस आर मोर देन जस्ट सेइंग के v at this point is equal to 0। ठीक है, let's say this is node 1, let's say this is node 1, so it's not enough to say that v at this point is 0। अगर ये फिक्स्ड बीम है ना, तो इसका ये मतलब ये है कि the angle here is also going to be equal to 0, right? अगर ये सिंपली सपोर्टेड हो तो उसमें सिर्फ v 0 होता है, उसमें एंगल कुछ हो सकता है, मगर जो फिक्स्ड प्रॉपर फिक्स्ड होती है तो उसमें हम कहते हैं कि ना सिर्फ इसकी डिस्प्लेसमेंट v 0 है इस पॉइंट पे, मगर जहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो भी 0 है, राइट? सो दिस इज लाइक अ टेंजेंट, ये जो मतलब द कर्व इज अ टेंजेंट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। और इट डजंट टेक मच टू शो कि अच्छा अगर हम कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0, so that is sort of equivalent to saying कि dv by dx is basically equal to 0। ठीक है, so this is the assumption that we are going to use. The theta is equal to 0 is going to mean कि dv by dx is basically equal to 0, which means at that point 1 के जहाँ पे चीज फिक्स्ड हो। ठीक है, so clearly मेरा पॉइंट ये था कि लीनियर इंटरपोलेशन मॉडल डजंट रियली वर्क, और हमें इस तरह की बीम चाहिए कि कि जिसमें हम ना सिर्फ इसकी वैल्यू ऑफ v स्पेसिफाई कर सकें जिसके नोड्स पे, बल्कि इट्स वैल्यू ऑफ dv by dx भी स्पेसिफाई कर सकें, राइट? बिकॉज एंगल्स आर पार्ट ऑफ दैट असम्पशन। ठीक है, ओके, सो द काइंड ऑफ बीम दैट वी नीड कि चार चीजें हमें पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल यू गॉट अ बीम ऑफ लेंथ l जिसके एक नोड है ये वाला और दूसरा नोड है ये वाला, लेट्स कॉल इट नोड 1 एंड नोड 2। सो नोड 1 पे you need both v and dv by dx। ठीक है, so that's q1 and this is q2। और नोड 2 पे भी you need both v and dv by dx। आपकी बाउंड्री कंडीशन शायद इनको स्पेसिफाई कर रही हो, या आपको कम से कम ये निकालना पड़ेगा टू फिगर आउट कि अच्छा बीम की शेप क्या है। ठीक है, सो बीच में जो मॉडल होगा, सिंस यू गॉट लाइक 4 वेरिएबल्स, ये 4 इक्वेशंस, सो यू नीड अ मॉडल टू व्हिच हैज 4 वेरिएबल्स। ठीक है, ताकि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैच हों, व्हिच मेक्स दिस ए क्यूबिक मॉडल। ठीक है, सो एक लीनियर मॉडल यहीं पे जाके खत्म हो जाता था, दिस वुड बी अ लीनियर मॉडल। ए क्वाड्रेटिक मॉडल वुड गो ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर, अगर आपके पास जो कि व्हिच इज अप्रोप्रिएट इफ यू गॉट लेट्स से axially loaded bar with 3 nodes। ठीक है, then a quadratic model is perfectly appropriate because आपके पास 3 पॉइंट्स पे एक u1 u2 u3 होगा, और आपने इंश्योर करना होगा कि when x is equal to let's say 0 तो फिर ये u is equal to u1 हो, when x is equal to अगर ये हाफ पे है तो l by 2 तो फिर u2 पे हो, और x is equal to l पे u is equal to u3 हो, right? So in that case you would have 3 equations and 3 unknowns would be appropriate, so you would just need a quadratic model। यहाँ पे you got 4 of these things, you got q1 q2 q3 q4। हमने इंश्योर करना है कि ऐसा मॉडल हो कि जिसमें which should fit all 4 of these things, so we need a cubic model। ठीक है, so the next steps are kind of long and we are going to entirely skip them and just come up with the end results। मगर हमने असल में क्या करना होता था, हमने शेप फंक्शन निकालने के लिए what we want to do is we want to write this v of x as some matrix n जिसके अंदर नोड शेप फंक्शन है multiplied by the vector q। ठीक है, so इस केस में our q is the vector q has 4 things which are basically q1 q2 q3 and q4। ठीक है, q1 and q3 are the ये vertical direction में displacement, right? v direction में जो displacement है, and q2 and q4 are the rate of change of that displacement, या the angle, right? So basically q2 is equal to theta 1, right? The angle at node 1, and this is equal to let's say theta 2, the angle at node 2। ठीक है, सो मुझे 4 शेप फंक्शंस चाहिए। मैंने करना किस तरह, 4 शेप फंक्शन निकालने किस तरह, I have to use these 4 things
to find alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, right? So first plug in x is equal to 0, right? So x is equal to 0, plug in करेंगे, everything goes away. I'm just going to get alpha 1 is equal to q1. Then take a derivative of this thing. So जब derivative लेंगे तो फिर ये first time is going to drop off. You're going to get 8 alpha 2 plus 2x alpha 3 plus 3x square alpha 4. Plug that equal to 0. So you're just going to get alpha 2 is equal to q2 because the rate of change uh, of v with respect to x is q2 at x is equal to 0. ठीक है, सो अल्फा 1 और अल्फा 2 निकालना तो बहुत ही आसान था. ये बाकी तो निकालने में थोड़ा सा इन्वॉल्व प्रोसेस होगा बिकॉज देन यू हैव टू प्लग इन x is equal to l and find the remaining two alpha 3 and alpha 4 by means of like a simultaneous equations को solve करना. ठीक है, so I'm gonna do that maybe step by step, आराम से बैठ के and post a video about it or something, but it can be done. It's not very difficult geometry. So एक दफा alpha 1 से alpha 4 तक निकलना है. Next step is that you have to rearrange this whole expression to look like some function multiplied by q1 plus, and that function is when you called n1, let's say. So we want to make this look like v of x is equal to n1 multiplied by q1 plus n2 multiplied by q2 plus n3 multiplied by q3 plus n4 multiplied by q4. So n1, 2, 3, 4 are your shape functions, and you can rewrite this in our usual matrix form as n times q. ठीक है, so the geometry has all been figured out for us. n1, 2, 3, 4 जो इस procedure से निकलते हैं, you can find them. I'll maybe do a little small derivation. ये चार निकल आते हैं, ठीक है, and then like this is part of what we needed, right? So remember कि beams बड़ी अजीब सी चीजें होती हैं, and you might not remember too much about them from mechanics or materials, but for our purpose, we still just needed a couple of things. We just needed some relationship between stress and strain. We needed another relationship between strain and displacement. And finally, we needed something between displacement and nodal displacement, जो कि shape functions हैं basically. तो ये चीज जो है ये आ गई है. Displacement के nodal displacement से जो ताल्लुक है ना, we have figured that out. All we needed was कि चलो ठीक है, एक linear interpolation function will not do. You're gonna have to use a cubic interpolation function for this purpose. You can figure it out and store the results. Okay, so इसके बाद the next thing is जो strain displacement का relationship है, ठीक है. So this is kind of weird because like harder to imagine. So don't give yourself too much of a hard time अगर आपको ये सही तरह से imagine नहीं होता, but because it is kind of difficult to imagine. So this is your beam जो कि undeformed form में इस तरह थी, ठीक है. ये जो dash line, this was your neutral axis sort of, जो कि by the way ऊपर dash line बदल गई है, right? So this ये proper dash तो नहीं है, ये like ये वाली line है, this is your neutral axis. Y-axis was perpendicular to that, ठीक है. So y-axis भी bend हुआ है. अच्छा, एक छोटा सा point during online classes, अगर आपके mic on हो तो it's possible अगर आपने headphones ना लगाए हो कि feedback आए, ठीक है. So keep your mics off in general, otherwise कोई सवाल हो तो of course on करें. Okay, so we had a point A originally here, जो कि बाद में A prime बन के इधर आ गया, ठीक है. So what we are claiming is कि again for an Euler-Bernoulli beam, the only thing that's happening is कि everything that's above this, अगर ये इस तरह bend हुआ है, everything that's above this neutral axis is going to be in compression. Everything that is below it is going to be in tension. So originally A would have been somewhere here. Now A is somewhere here. Okay. So now there is a small amount of displacement in the x direction, जो कि u है, right? जो कि this distance right here है, which shows कि अच्छा यार इतना इसका u कम हो गया है, इसकी वजह से एक compression में आ गई है, जिसकी वजह से there is going to be compressive stresses on it.
ठीक है. And it doesn't like बाकी ये trigonometry है sort of के this u is going to depend on this angle जो कि partial v by partial x है. Remember के ये angle को आप approximate कर सकते हैं because small angles पे tan theta is equal to theta, right? Tan theta is almost equal to theta, which is equal to partial v by partial x multiplied by ये क्या कहते हैं the coordinate y. ठीक है. So it's a bit of trigonometry to show कि ये जो distance w है, जो displacement या deformation in the x direction है, that's going to be equal to minus y into partial v by partial x. So इसमें minus इस वजह से कि if you go above the neutral axis, you're going to have this u to be a negative value. If you go below, so this is going to be a positive value. ठीक है. Okay. Right, so this is the result from the previous slide. This is the only weird result जो कि अगर आप इसको imagine कर सकते हैं ना पिछली slide को देखें तो बाकी सारी चीजें systematically हमें method minimum potential energy का method बना के दे देता है. ठीक है. So what we are saying is कि all we have is really stresses and strains in the x direction जो कि neutral axis पे 0 है, ऊपर वाली side पे compressive है, नीचे वाली side पे intention है. So all we have is strain in the x direction which is partial u by partial x जो कि अगर आपके पास u की definition ये हो तो just take a derivative of this with respect to x, you're going to get minus y multiplied by partial square, right? Double derivative in the x axis. Sorry, in the x coordinate. ठीक है. Okay, so इसको हम इसमें जो you remember के जो b था, this b was an operator L applied on the shape functions n. ठीक है. So ये जो v है यहाँ पे you have to plug in the definition v is equal to the shape functions n का matrix multiplied by q. ठीक है. By the way, I'm going to do this instead of those squiggly arrows. I'm just going to put an arrow on top of vectors because this is easier to do, right? चलो board नहीं है मेरे पास, so this notation is easier. Alternatively, इसके नीचे भी अगर एक dash होता है ना, that also indicates के you're talking about a vector. ठीक है. Okay, so take these definitions of n और इनका double derivative लें with respect to x. ठीक है. And plug them back here, right? The y is irrelevant. Y जो है as it is minus y as it is r है, right? So let's just look at it, right? The first element of this b is the double derivative of this. By the way, 1 over L cube जो है ना वो भी as it is ये L cube यहाँ से borrow किया जा रहा है. So इसका मैं double derivative लूँगा. What I'm going to end up with is 6 multiplied by 2 multiplied by 2. बल्कि 6 multiplied by 2 is enough. 12x minus 6L, right? So that's going to be your first element, 12x minus 6L, double derivative of n1. So this is the double derivative of n2, n3, and n4. Okay? So this whole thing is your b. Okay? So all we are left with is to do that weird multiplication and integration thing, जो कि ये है. ठीक है. So इसमें b निकल आया, b transpose को हम b से multiply कर सकते हैं, no issues there. This d thing is just equal to e because घुमा फिरा के सिर्फ हम लोग x direction के अंदर ही बात कर रहे हैं कि क्या चीज डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन की वजह से ही सारे स्ट्रेसेस हो रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है इसके अंदर. बाय द वे, इफ यू आर लाइक रियली इंटरेस्टेड, तो देर आर मोर रियलिस्टिक, मोर एक्यूरेट मॉडल्स ऑफ बीम्स. ये ऑयलर बर्नौली बीम है. इससे एक ऊपर लेवल पे देयर समथिंग कॉल्ड टिमोशेंको बीम. You can have a look at those assumptions as well. Anyway, so this multiplication is not difficult to carry out. इस integration के साथ क्या करें, ये dv आ गए हैं यहाँ पे, तो हम इसके साथ ये कर सकते हैं कि इस dv को हम replace कर सकते हैं by integration in two parts, right? So you've got integration of dx from length 0 से l, और उसके बाद
यहाँ पे dA आ गया, so this dA into dx is basically equal to dV. ठीक है, okay, so अब you might not at all remember, मगर second moment of area एक चीज होती थी जो कि ये है, ठीक है, which had a definition, अगर इस एक्सिस में हो, y square dA, ठीक है, और एक घुमा फिरा के वही चीज है जो कि फॉर एग्जाम्पल फॉर ए रेक्टेंगुलर profile, it's just bhq by 12, right? Remember that thing? Second moment of area. Uski actual mathematical definition was equal to was y squared का integral over an entire cross sectional area. ठीक है, so इसमें जो ये integral over the area और y square, remember के if you look at b के अंदर ये y है, so b transpose को जब मैं b से multiply कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक y square आ जाएगा, ठीक है, so ये y square और ये dA घुमा फिरा के all they become is this I in the ZZ direction, ठीक है, and the rest of it is, अच्छा, so अब जब b transpose को b से multiply कर रहे हैं तो you're gonna get terms जिसके अंदर x square और x और कुछ constants होंगे, so what you're supposed to do is take an integral of that, उसको dx basically लेना है from 0 से L, so you're gonna end up with just constants, x is going to disappear because वो integrate होने के बाद उसके अंदर वो 0 से L हम limits डालेंगे and you're gonna get constants. So once again, it seems kind of like magic because we didn't really carry out any of these individual calculations. Honestly, we don't particularly need to, in my opinion, because it's in the text. ये लोगों ने किया हुआ है, इस पे काम हो चुका है. But still, for demonstration purposes, I will maybe do some of these terms. I am not crazy enough to do all 16 of these terms. That's going to take way too long. But I will do some of these terms just to show you कि ये आया कहाँ से है. Or maybe like write a MATLAB code जो कि symbolically इसमें से आधा काम कर दे हमारे लिए. And show you that. So it's not magic. Just b जब हमारे पास आ गया तो b ट्रांसपोज को b से मल्टीप्लाई करें, जो ये इंटेग्रल वाला पार्ट है dA के साथ, that translates into this I thingy, और जो इंटेग्रल पार्ट dx के साथ है वो जो x वाली टर्म्स है उसको इंटीग्रेट करके लिमिट 0 से L पुट करें तो आ जाती हैं, ठीक है. बट इन एनी केस व्हाट एंड्स अप इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड जिसने आपको ये अजीब सा इंटेग्रल दिया था, that results now for the case of beams in a stiffness matrix जो कि 4x4 का एक stiffness matrix है, ठीक है. और एक दफा ये आ जाए जिस मर्जी तरीके से आया, उसके बाद the FEM method should provide you enough clarity कि इसको आगे इस्तेमाल किस तरह करना है, ठीक है. So maybe we'll do problems related to यही बीम्स को इसके को इस्तेमाल करना किस तरह है, मे बी नेक्स्ट टाइम. अच्छा, मगर कुछ क्लासेस पहले हमने जो बात की थी ना ये स्पेस फ्रेम एलिमेंट की, उसको हम दोबारा से थोड़ा सा देख सकते हैं बिकॉज अब हमें बीम वाली बात भी थोड़ी बहुत समझ आ गई है, ठीक है. सो मोस्ट जनरली, not most generally because I guess 3D elements would be most general, मगर if you got let's say something जो कि 3D space में XYZ में किसी भी direction में oriented है, which can undergo torsion, it can undergo compression and tension, and it can bend in any direction, ठीक है. So that's going to be called a space frame element. Maybe this is not like maybe even this is too much to handle just by our own pen and paper or using our own codes, but at least 2D के अंदर इसको manage करना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है. अच्छा, मगर इस केस में if you look at the coordinates, you're gonna have I think 12 coordinates. Yeah, 12 coordinates for one space frame element, जो कि let's say इसके दो ही नोड्स होंगे, नोड्स I and नोड J. So नोड I के ऊपर जो Q1 है वो टेंशन कंप्रेशन वाला एलिमेंट है, Q2 बेंडिंग है, Q3 डिफरेंट साइड की बेंडिंग है, राइट. सो रिमेंबर कि दो तरह से ये चीज बेंड हो सकती है, लाइक ऊपर की तरफ बेंड हो रही है या ये राइट की तरफ बेंड हो रही है या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ठीक है. अच्छा, उसके बाद Q4 इज टॉर्जन, ठीक है. Q5 and Q6 are
ये जो angles associated with bending है, remember कि bending just doesn't mean कि सिर्फ it's not just ये lateral deformation, it's also the angle associated with it. ठीक है, so साफ ना सिर्फ bend हो रहा है, like सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर एक particular angle के साथ जा रहा है, दोनों चीजें bending का ही हिस्सा है. ठीक है, so that is this Q6 and Q5. Okay. So these are your 6 coordinates in the local system associated with node I, and similarly you're going to have 6 coordinates in the local system associated with node J. And then you have to remember कि अच्छा अगर बहुत सारे space frame elements connected हैं and they are all oriented along different angles, then what you need to do is bring them all to a common coordinate system. So you have to translate them all to a global coordinate system, जिसके लिए once again वो transformation matrix को आएगा lambda, जो कि बनाना पड़ेगा और उसके बाद पूरे के पूरे local frame से global frame में लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, so obviously we are not at all interested in finding the whole thing, but at least in the local coordinate system, जो इसका K matrix है ना, that's not very difficult hopefully to dissect कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, so you can see that this element right here is related to ये axial tension compression. This and this, ये जो चार चीजें हैं, all of these are related to bending. ठीक है, so ये beams वाली चीजें हैं. And finally this you might recall is related to torsion, right? So remember torsional springs vibration में भी आए थे, उसमें हमने K equivalent for a torsional beam was just this JG over L term. So जिसमें ये जो है ना, ये this is called your shear modulus. मुझे horizontal lines बहुत ज़्यादा annoy कर रही हैं. I hope it's fine. And this J thing is polar moment of inertia. You might remember polar moment of inertia was a term that's for slightly different but still similar to ये second moment of areas. Units दोनों के similar होते हैं, या दोनों के units meter raised to the fourth होते हैं, so they are kind of similar but थोड़ा सा definition में फर्क होता है. ठीक है, so this has elements of bending and torsion and axial compression and क्या कहते हैं tension all mixed in one. ठीक है, so उसके आगे भूल जाएं कि अच्छा इसको अब ट्रांसफॉर्म किस तरह करना है, मगर मैंने जिस तरह बताया था एक लैम्डा भी होगा जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर ऑनेस्टली है कुछ खास ज्यादा नहीं. ऑल ऑफ दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, जो कि in the x, y and z direction, the angle, the sign that something makes, the cosine of the angle something makes with the x and the y and the z axis, right? But gathering it all together would be kind of difficult. ठीक है, ओके, सो मेरे ख्याल में इसको यहीं पे रैप अप करते हैं. इसके अंदर जो छोटी मोटी डिटेल्स थी उनके बारे में डिटेल्स से उम्मीद है कि किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. Let me just stop recording here.